A very good morning, students. So this is the time for your political science class, and as I told you in the previous classes that we have completed 6 chapters. I just want to recall you one by one. First of all, we have done the Cold War, then the end of bipolarity. After that, you come to know that US as a hegemonic power. Then we have done chapter number 4, in which we have done alternative centers of powers. And in chapter number 5, you come to know about South Asia. Then in chapter number 6, we have done United Nations. And in this chapter number 7, we are completing the issue of security. And in this chapter, you come to know that security means absence of threat. किसी भी तरह के डर का अभाव. So, in security chapter, we have done the 2 types of security. The traditional notion of security, जिसमें आपने ये पढ़ा परंपरागत सुरक्षा में कि जो खतरा है वो हमेशा बाहर से आता है, यानी we may get attack from outside. It was the main concept of traditional notion of security. Then we have done the traditional notion of internal security. Internal security में हमने ये जाना कि most of the time we are being considered that internally we are secured, because that was the time of the Cold War. That was the time when so many new countries got their independence, and that is why they were of the view that internally they were secured. After that, we reach to the topic that is known traditional notion of security, यानी सुरक्षा के अपरंपरागत स्रोत. In the known traditional notion of security, it is go beyond the military threats, which include the wide range of threats and dangers affecting the condition of human existence. यानी ऐसे खतरे जिससे पूरी मानव जाति को ही खत्म होने की संभावना हो. They begin by questioning the traditional reverent of security. Reverent means to whom to be secured. In the traditional security, as I told you earlier, it is been considered that country to be secured first. यानी किसको बचाना है? देश को. While the non-traditional notion of security views the security means human security, means global security. Human security means what? मानवता की सुरक्षा, मनुष्य बचना चाहिए. It is about the protection of people more than the protection of the states. State, पुराने ज़माने में मैं हमेशा ये बोलती हूँ, स्टोरी बताती हूँ आपको. एक चलता था कि भाई जान चली जाए पर देश न जाए. अगर जान चली जाएगी तो ऑफ कोर्स देश चला ही जाएगा भाई. तो इट मीन्स whom to be secured first. We have to secure the human. Human security and state security should be of an hour same things. And that is why human security people, they favored that it is the primary goal is the protection of individuals, rather than there are differences about precisely what threats individual should be protected from. यानी मुद्दा ये नहीं है किसको बचाना है, मुद्दा ये है कि अगर ह्यूमन को बचाना है तो कौन से थ्रेट्स हैं, कौन सी खतरों से बचाना है. इसमें भी जो नैरो कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी वो फोकस करते हैं. they want that human life to be secured, not only the human life. यानी अगर आप किसी को एक रोटी और पानी खिलाते हो, पानी देते हो, तो पर्सन में भी सिक्योर्ड, जिंदा रहेगा वो. बट दिस सिक्योरिटी मीन्स सिक्योरिटी फ्रॉम डिजीजेस, security from natural disasters, because it kill more people than war. Security by genocides,
terrorism, and there should be freedom from fear. If we consider security, it means that a human must be given proper dignity. उसे आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि किसी को खाना खिला के पानी पिला के हम उसे जिंदा रखें और हम कहें वो सिक्योर्ड है. The person must have right to get education. The person must get right to achieve his or her best self. And a person must have freedom from want, freedom from fear. अगर हम डर रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि हम सिक्योर्ड नहीं हैं. अगर हम प्रेजेंट इरा की बात करें, आज के समय की बात करें, तो वी डोंट कंसीडर आवर सेल्फ टू बी सिक्योर्ड. वी आर इन द होम. हम सब घरों में हैं. तो क्या हम सिक्योर्ड हैं? ऑफ कोर्स नॉट. वी आर नॉट इवन सेफ इन आवर होम्स. The another concept was called the global security. ऐसी सुरक्षा जिसे हम वैश्विक सुरक्षा के दायरे में लाएंगे. The idea of global security was started from 1990s because you know that there is a global warming, there is international terrorism, there is health epidemics like AIDS, bird flu, as well as coronavirus. No country can resolve these problem alone. जहाँ तक वैश्विक सुरक्षा की बात है, तो आज ऐसी महामारियां हैं, आज ऐसा टेररिज्म है जिसमें हमने कुछ नहीं किया, but still we are sufferers. तो the concept of global security means that everyone have to fight to maintain the global security. And in some situation, one country may have effect a lot. उसको ज़्यादा असर पड़ रहा होता है ग्लोबल सिक्योरिटी का. अगर आज का सिनेरियो ले तो यू नो दैट यूरोपियन कंट्रीज आर द वर्स्ट सफरर्स. अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो कंट्री एट द सी कोस्ट दे आर द सफरर्स. उनको ज़्यादा नुकसान होगा वेदर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग और नॉट. सो दिस वॉज ऑल द नोन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी. Although I have explained it in the previous classes also, but I want to recapitulate it because I want to begin with my new topic, that is new sources of threats. आज दुनिया के सामने खतरे के नए स्रोत क्या हैं? The most important threat to the global security, number one, it is terrorism. Now the question arises, what is terrorism? क्या है terrorism? क्या हमने फैलाया है? Are we responsible for this? Now terrorism refers to the political violence that target the civilians deliberately and indiscriminately. यानी ऐसे लोग जिनका प्रॉब्लम पॉलिटिकल है, समस्या राजनीति से है, बट व्हाट दे डू, दे टारगेट द सिविलियंस, आम जनता को मारते हैं. International terrorism involves the citizens or territory of more than one country. आपको 9/11 याद होगा. इसके अलावा भी आपने बहुत सारे अटैक देखे होंगे. 26/11 इंडिया का है. सो यहाँ पर टारगेट जो है वो आउटसाइड कंट्री होता है. टेररिस्ट ग्रुप सीक टू चेंज अ पॉलिटिकल कंटेस्ट और कंडीशन दैट दे डू नॉट लाइक बाय फोर्स और थ्रेट ऑफ फोर्स. एक्चुअली उनका पर्पस जो है वो सरकारों से उनकी लड़ाई होती है. दे डजंट लाइक द गवर्नमेंट, दे डजंट लाइक द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट अडॉप्टेड बाय देम. दैट इज व्हाई दे वांट द गवर्नमेंट, दे आर प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट टू चेंज देयर पॉलिसी, एंड फॉर दैट दे यूज सिविलियंस एज अ वेपन्स. Civilian targets are usually chosen to terrorize the public and to use the unhappiness of public as a weapon against the national government or the other parties in the conflicts. बेसिकली उनका जिनसे विवाद होता है वो उसमें लोगों को हथियारों की तरह इस्तेमाल करते हैं. These people are too cruel that they doesn't leave even the children, even the women, and we can say that these people are inhuman.
The classic cases of terrorism involve hijacking plans. वो क्या कर रहे होते हैं? प्लेन हाईजैक कर रहे होते हैं. Planting bombs in trains, cafes, markets and other crowded places. मेन उनका काम क्या है? भीड़ को मारना. Since 11 September 2001, when terrorists attacked the World Trade Center in America, other government and public have paid more attention to terrorism. अब सीधी सी बात है, जब अमेरिका को टारगेट बनाया गया तो अब टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ाई और स्ट्रांग हुई. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई आफ्टर अमेरिका ओनली? Because you know that America is having the largest military powers in the world, and still that country was under the grip of terrorism. In the past, most of the terror attacks have occurred in Middle East, Europe, Latin America and South Asia. And even today, we can't think that we are not in the grip of terrorism. तो जो आतंकवाद है, ऐसा नहीं है वो एक देश में है. इट इज़ फाउंड एवरीवेयर. इट कैन बी फाइंड एनीवेयर. स्लीपर सेल्स तो आपने सुना ही होगा. दे मे बी लिविंग इन बिटवीन यू एंड दे मे हार्म अस एनी टाइम, एनी मोमेंट. द अनदर इशू ऑफ दिस नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी इज ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स? होते क्या है मानव अधिकार? यानी अ पर्सन शुड बी ट्रीटेड एज अ ह्यूमन, वेदर ही इज इन द जेल, वेदर ही इज अ क्रिमिनल. द बेसिक राइट शुड बी गिवन टू ऑल. Human rights have come to be classified into three types. There are three types of human rights. The first type is political rights. Political rights means right to speech, right to assembly, right to give vote. The second type of right is economic and social rights. Economic right, you know that economic right means equal wages for equal work. There shouldn't be any discrimination between male and female, and not even the transgenders. They should be treated as human. And the third type of right is the colonized people or ethnic and indigenous minorities. Indigenous minority क्या होते हैं? उस जगह के रहने वाले मूलवासी. तो यानी पहले तरह का अधिकार आप सब जानते हैं. वी हैव पॉलिटिकल राइट्स एज वेल. हम सबके पास राजनीतिक अधिकार होते हैं. वी हैव राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है. सेकेंड राइट में बात आ रही है इकोनॉमिक राइट, यानी एक से काम के लिए एक सा वेतन. नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स इटसेल्फ. एंड सोशल राइट्स, यू नो दैट there was the differences between blacks and whites. There were the differences between upper class, lower class. So it shouldn't be there. The third type of right is the right of indigenous people, यानी मूलवासियों के अधिकार. जो जहाँ का बाशिंदा है, जो जहाँ का रहने वाला है, वहाँ की लैंड पर, वहाँ के रिसोर्सेज पर, the person have the first right as compared to others. While there is a broad agreement on this classification, there is no agreement on which set of rights should be considered as the universal human rights. इस मामले में अब तक दुनिया भर में कोई सहमति नहीं हो पाई है कि ऐसे कौन से अधिकार हैं जिन्हें हम यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स कहें. Even the international community shouldn't have that proper definition of rights. Since 1990s, developments such as Iraq invasion of Kuwait, genocide in Rwanda, Indonesian military's killing of the people in East Timor have led to debate on whether or not the UN should intervene to stop the human right abuse. There are those who argue that UN should have such power. If these rights are violated, then UN should take action against that. The another issue of non-traditional security is global poverty. आज आप सब जानते हैं
दुनिया जो है वो गरीबी में जी रही है. देयर इज़ अ ग्लोबल पॉवर्टी. द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज more than 650 crores. It may be 700 or 800 crores within near future, and maybe 900 to 1000 crore, and out of that there is a serious issue that currently the half of the population occurs in just 6 countries. अगर हम दुनिया भर की आबादी की बात करें तो लगभग आधी आबादी इन 6 देशों में रहती है. दैट इज़ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया. अमंग द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज. और ये देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में माने जाते हैं. एंड इट इज़ बीन एक्सपेक्टेड दैट द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रिपल्ड इन नेक्स्ट 50 ईयर्स. यानी आने वाले 50 सालों में इन देशों की जनसंख्या लगभग प्रेजेंट जनसंख्या से 3 गुना हो जाएगी. वेयर एज मैनी रिच कंट्री विल सी द पॉपुलेशन श्रिंकेज इन दिस पीरियड. अगर हम अमीर देशों की बात करते हैं तो वहाँ पर हम जनसंख्या को श्रिंक होता हुआ देख रहे हैं, यानी उनकी जनसंख्या, उनकी पॉपुलेशन रिड्यूस कर रही है. हाई per capita incomes and low population growth make rich state or rich social groups richer, whereas the low incomes and high population growth reinforce each other to make poor state poorer and get more poor. Globally, the disparity contributes to a gap between the northern and southern countries of the world. आप जानते हैं जो rich countries हैं, they are known as global north and others are known as global south. Within the south, the disparities have also sharpened as a few countries have managed to slow down the population growth. और इसमें भी कुछ देश अपनी जनसंख्या को स्लो डाउन यानी नियंत्रित करने में कामयाब रहे हैं and raise their income while others have failed to do so. For example, the most of the world's armed conflicts now take place in sub-Saharan Africa, which is also the poorest region in the world. At the turn of 21st century, more people were being killed in wars in this region than in rest of the world. And you know that this poverty create the problem of migration. लोग क्या होते हैं, इस गरीबी की वजह से लोग माइग्रेट होते हैं. दे स्टार्ट लीविंग देयर प्लेसेस एंड रीचिंग टू अदर प्लेसेस. नाउ दिस पॉवर्टी इन साउथ हैज़ ऑल्सो बीन द लार्ज स्केल माइग्रेशन टू सीक बेटर लाइफ, स्पेशली द बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन द नॉर्थ. दिस हैज़ क्रिएटेड द इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रिक्शंस. International laws and norms make a distinction between the migrants, which have to leave their homes, their countries, and refugees, those who flee from war, natural disasters, or political persecution. States are generally supposed to accept refugees. You know it very well. आप सब जानते ही हैं कि इस गरीबी की वजह से लोग माइग्रेट होते हैं और जो कंट्रीज़ हैं वो कंपेल की जाती हैं कि उन्हें रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट करना ही है. लेकिन माइग्रेशन के लिए जो रिच कंट्रीज़ हैं, दे मेक सम स्पेशल लॉज, दे प्रिवेंट द पीपल टू एंटरिंग इन देयर कंट्री, बट दे डू नॉट हैव टू एक्सेप्ट द माइग्रेंट्स. वाइल रेफ्यूजीज लीव देयर कंट्री ऑफ द रीजन, द पीपल हु हैव फ्लेड देयर होम्स but remain within the national borders are called internally displaced people. आप सब जानते हैं हमारे कश्मीर के बहुत सारे लोग जो प्रॉब्लम्स फेस करके इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं, स्पेशली द कश्मीरी पंडित्स that fled the violence in the Kashmir Valley in early 90s are the example of an internally displaced community. अगर आप इंटरनेशनल मैप्स को देखें तो you will find that more and more people of poor country are migrating to the richer countries. और जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन ड्रेन.
The best brain of the country, it migrates to the rich country, they work for them, and poor become poorer. The another issue is known as health epidemics. Health epidemics, आप सब इस बात से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं. HIV, AIDS, bird flu, SARS, and nowadays this corona. This is also a big problem in front of the public nowadays. You know that people are moving from one country to another country for business, tourism, and military operation. One's country's success or failure in limiting the spread of these disease affects infection to other countries. It was considered that by 2003, an estimated 4 crore people would be infected by HIV/AIDS. And now this number is, you know that, you can't even count. And out of them, 2/3 of them will belong to Africa, and rest of them will belong to South Asia. In Northern America and other industrialized countries, new drug therapies dramatically lowered the death rate from HIV/AIDS. अगर आप अमीर देशों की बात करें तो वहाँ अब एड्स से लोग नहीं मरते. They have good therapies for them, but the treatment were too expensive to help the poor region like Africa, where it has proved to be the major factor of driving out the region backward into the deep poverty. और आप सब जानते हैं, there are so many problems like the Hanta virus, Ebola virus. This is hepatitis C has emerged. While old diseases like tuberculosis, malaria, dengue fever, cholera have mutated into the drug resistance from that are difficult to treat. और अब जो पुरानी बीमारियां हैं वो भी क्या हो चुकी हैं, ड्रग रेजिस्टेंट, और उनको भी ट्रीट करना मुश्किल होता जा रहा है. एपिडेमिक अमंग द एनिमल्स इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. आपने 90s में देखा होगा, सुना होगा, देर आर सो मेनी डिजीजेस विच आर फाउंड इन द पोल्ट्री एक्सेट्रा, एंड दिस इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम, and the world have to find the answers of these problems. Now the question arises that how we can be secured out of all these problems. So the answer is cooperative security. यानी इन सब चीज़ों को संभालने का, इन सब से बचने का जो तरीका हमारे पास है वो क्या है, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, सामूहिक सुरक्षा. We can see that dealing with many of these non-traditional threats to security required the cooperation rather than the military forces. Military forces may have a role to play in combating terrorism or in enforcing human rights, but it is difficult to see what force would do to help to alleviate poverty, manage migration and refugee movement, and control epidemics. Indeed, in most of the cases, the use of military force would only make the matter worse. तो हमें क्या करना है? We need cooperation to deal with these non-traditional security. For more effective is to devise strategies and involve international cooperation. Cooperation may be bilateral, कई मामलों में दो देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा. It may be regional, it may be continental, or it may be global. कई बार कुछ क्षेत्रों को, कई बार कुछ महाद्वीपों को, और कई बार पूरे विश्व को साथ आने की ज़रूरत पड़ेगी. It would all depend on the nature of the threat and the willingness and the ability of the country to respond. Cooperative security may also involve a variety of other players, both international and national. International organizations like UN, the World Health Organization, World Bank, IMF. There should be some non-governmental organizations like Amnesty International, Red Cross, private foundations and charities, churches,
and religious organizations, some business group, some NGOs, some great personalities should work to maintain the cooperative security. Cooperative security may involve the use of force at a last method. The international community may have to sanction the use of force to deal with the government that kill their own people or ignore the misery of the population who are devastated by poverty, diseases, etc. It may have to agree to use of the violence against the international terrorists and those who harbor them. यानी हम आतंकवादियों के अगेंस्ट फोर्स यूज़ कर सकते हैं, हम उन देशों के अगेंस्ट फोर्स यूज़ कर सकते हैं जो अपने लोगों को डिजीज़ और पॉवर्टी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज़ मच बेटर when the use of force is sanctioned and applied collectively by international community rather than when an individual country decide to use the force of its own. तो ये सब थे सुरक्षा के अपरंपरागत स्रोत और उनसे बचने के तरीके. This ends our class. I hope that you are getting it. Do the assignment. Make notes that will help you out to understand the chapter. Thank you very much.